Okay. Good morning, everyone, and welcome to the Ahmedabad round of the TCS Rural IT Quiz in association with the Department of Science and Technology, Government of Gujarat, and with support from Guj Frost, the Gujarat Council of Science and Technology. बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का. I have only one request before I get going in this prelim round. If there are any teachers, guardians, parents who are on the ground level, may I please request you to head to the first floor for now, just for the prelims, and then you get it back in. So this is all students as of now, right? Okay, great. तो इससे पहले कि हम प्रीलिम राउंड की शुरुआत करें, सबसे पहले तो does everybody have the answer sheet with them? Can I see it in the air? Can we all confirm? If we have the answer sheet, hold the pose for one moment. And I hope everybody has written down their names, school, district, class, ये सारे details आपने लिखे होंगे. I think my colleague Anand had already instructed you on that. तो आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सारे डिटेल्स लिख लिए हैं. Sometimes can get missed. Also, once again, a big thanks to all the students who are participating. बहुत बहुत धन्यवाद आप इस event में भाग लेने के लिए, because I know that a lot of you have come from different areas around the state. दूर से आए हैं from 33 different districts, and I know you guys have been through an entire round with through the community science centers in those districts, and you have made it till here. So before we get started and look for our regional champion who will represent Ahmedabad and Gujarat, of course, at the national stage, a big round of applause for yourselves for being here today, making it. The quiz that it is 25 years and counting. So let's get going. Let's take a look at the rules of the prelim. Rules समझा देते हैं आपको, उसके बाद we'll get into the questions. Everybody is comfortable with Hindi? Hindi ठीक है? सबसे पहली बात, there are no negative marks, तो आप सारे questions attempt जरूर कीजिएगा. There are 20 questions आपके पेपर में आपको दिखेंगे. There are spaces to write 20 answers. क्योंकि कोई negative mark नहीं है, तो कोई question अगर आपको नहीं भी आता है, आप sure नहीं हो, बिल्कुल guess लिखिए, because if it's correct, you can gain a point. There is nothing to lose if by chance you are incorrect. One student per school will be selected, so the top 6 institutions will qualify for the finals. Top 6 जो schools होंगे अलग-अलग institutions के. So I know बहुत सारे schools होंगे जहाँ से multiple participants आए होंगे, तो whoever is the top scoring is the one who will get through. इसका मतलब ये भी है कि जब prelims चलेगा, you don't know each other, right? There is no school camaraderie, there is no friendship, there is nothing. You are only competing for yourself. आप अपने आप के लिए compete कर रहे हो, to make sure that you are writing the answers only by yourself. Okay. Lastly, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमको सिर्फ 6 सिलेक्ट करने हैं for the stage final. तो जाहिर है कि बहुत ही टाइट कंपटीशन रहेगा. तो अगर कहीं पे स्कोर्स टाई हुए, टू फाइंड आउट द टॉप 6 स्कोर्स वी विल यूज इनबिल्ट टाई ब्रेकर क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टार्ट टाई ब्रेकर क्वेश्चंस हैं. तो अगर टाई हुआ तो हम वो वाले क्वेश्चन यूज करेंगे टू ट्राई एंड
break the tie. And almost goes without saying, especially आजकल के quizzes में, that if you have any smart devices, includes smartphones, smartwatches, ऐसे सब तरह की चीजें, please keep them away or switched off during the duration of the quiz. Okay? क्योंकि anybody even having a smart device, आप उसमें आंसर गूगल कर रहे हो कि नहीं वो अलग बात है, but even if you have a smart device out or if you are using it for anything during the quiz, you may be disqualified. So please keep that in mind. That's a very strict, straightforward rule because we want to make sure that this is fair and the right kind of competition. So, क्योंकि हम यहाँ पे TCS रूरल IT क्विज में आप लोगों में से चैंपियन ढूंढने आए हैं. Google is not going to be the champion of this quiz, right? So please make sure that is the case and no consulting among yourselves either. So those are the rules. Let's get going with the questions. 3 levels है इस क्विज के, 20 क्वेश्चंस. पहले लेवल में 5 क्वेश्चन, सेकंड लेवल में और 5 क्वेश्चन और आखिरी लेवल में 10 क्वेश्चन. पहले 10 जो सवाल होंगे 1 to 10, all of them have options. उसमें आपको स्क्रीन पे ऑप्शंस भी दिखेंगे. मैं ऑप्शंस पढ़ के भी सुना दूंगा. So you will only have to tell me which of those options is the correct answer. लेकिन आप जब आंसर लिखोगे, please write the entire answer. जैसे सपोज है A Microsoft, तो आप पूरा A Microsoft सिर्फ ऑप्शन A लिख के पढ़ना. ठीक है? Just to make sure that the answer is properly read. क्या आपसे कुछ गलती भी हो गई ऑप्शन नंबर लिखने में, एटलीस्ट आपने आंसर लिख दिया तो वी विल नो दैट यू गॉट इट राइट. ओके, करेक्ट क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर स्पेस पे लिखेगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 13 में आना चाहिए ऐसे. तो कीप ए ट्रैक ऑफ इट. 20 क्वेश्चंस है, काफी लंबा है. और आखिरी जो 10 क्वेश्चंस है 11 to 20, उन सारे सवालों का आंसर आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शंस इन दोस क्वेश्चंस, सो यू हैव टू राइट द आंसर. मेक श्योर यू राइट द आंसर क्लियरली, अच्छे हैंडराइटिंग में. इंग्लिश में भी आंसर लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, दैट्स फाइन, बट क्लियरली लिखेगा जो भी आप. ठीक है? सो दोज आर द बेसिक रूल्स. लेट्स गेट गोइंग विद द प्रीलिम विद क्वेश्चन नंबर 1. Here it is. What programming language is widely used for web development along with HTML and CSS? वेबसाइट के डेवलपमेंट में, वेबसाइट बनाने में या वेब डेवलपमेंट में इनमें से कौन सी लैंग्वेज का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? HTML और CSS शायद आपको मालूम होगा. HTML बहुत यूज होता था एक टाइम पे वेबसाइट बनाने में, और CSS जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होते हैं वो भी बहुत इस्तेमाल होते हैं वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट बनाने में. और इनमें से कौन सा और एक लैंग्वेज है जो यूज होता है? सो इज इट A जावास्क्रिप्ट, B पाइथन और C शार्प. तो ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. A पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, सॉरी A जावास्क्रिप्ट, B पाइथन, C शार्प. तो अगर आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कुछ पता है, अगर आपने सुना है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो आप गेस कर सकते हो कि इनमें से कौन सा वेब डेवलपमेंट के लिए होगा. राइट, बिकॉज़ ऑल ऑफ दीज आर नॉट यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, ऑब्वियसली ओनली वन ऑफ देम इज. तो आपको अगर ये भी पता है कि कौन से वाले गलत आंसर्स हैं, तो शायद आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर्स कर सकते हो. So that's the advantage of the options round. Please use that advantage. Okay, so I want the answer to what programming language along with HTML and CSS is very widely used for web development. Okay, so let me just come down off the stage for a bit. Okay, move on to question number 1. Question number 2 की तरफ चलें. Here is question number 2. Control C जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, वो कौन से कमांड के लिए या किस
function के लिए यूज किया जाता है. When you do Control C on the keyboard, what does it do? Does it A copy, B cut और C paste? तो आप जब किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, right? So you do Control C. What does that command or the keyboard shortcut do? Does it A copy, B cut or C paste? ठीक है, आसान सवाल था ये. Let's get to question number 3. I can see some people who have just come in. So just take a moment, let them settle down. आप लोग बैठ जाओ. हाँ, जो लोग अभी आए हैं, अब प्लीज मेक श्योर कि आप आंसर शीट पे अपना नाम, डिटेल्स ये सब लिख लें. प्लीज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज दैट्स वेयर वी आर एट. बाकी एट द एंड आई क्विकली रिपीट द क्वेश्चन वंस, तो आप इस टाइम पहले दो क्वेश्चन का क्या सकते. ओके गाइस, so question number 3 is what company, so this is about tech products, technology companies. So what company makes the Think Center line of desktop computers? So ये desktop computers हैं जिनका नाम है Think Center, ब्रांड का नाम है. तो वो कौन सी कंपनी बनाती है? तो ये सारे कंप्यूटर कंपनीज हैं. A Lenovo, B Acer या फिर C Dell. ये सारे लोग डेस्कटॉप पीसीज भी बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं. हम डेस्कटॉप पीसीज की बात कर रहे हैं और व्हाट इज कॉल्ड द Think Center, राइट? तो ये थिंक जो ब्रांडिंग है, ये इस कंपनी के डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में यूज किया जाता है. ये थिंक जो शब्द है इस कंपनी के साथ काफी एसोसिएट किया जाता है. तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो व्हिच कंपनी माइट इट, राइट? सो द चॉइसेस आर Lenovo, Acer और Dell. Lenovo, Acer and Dell. Interestingly, Lenovo, Acer दोनों एशियन कंपनीज है. Lenovo चाइना की कंपनी है, Acer इज ताइवान, आई थिंक. Dell इज एन अमेरिकन कंपनी. Not that it might help you answer the question, and I use this information in every video. But the question is, Think Center desktop PCs, what is the company? Who's the manufacturer of these? Okay. So from question C, let's move on to question number 4. ये हमारा चौथा क्वेश्चन. VPN, जब आप इंटरनेट कनेक्शंस की बात करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VPN? बहुत लोग बात करते हैं VPN के बारे में, VPN एप्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, राइट? सो व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VPN? तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं. A virtual private network VPN, or B verified personal node, or C virtual program network. When you talk about VPN in the context of the internet and connectivity, what does VPN stand for? Does it stand for virtual private network, verified personal node, or virtual program network? Once again, correct option और उसके साथ आंसर. Okay. So what does VPN stand for in the context of the internet? आपने VPN सुना है otherwise? You should probably know. Okay. Going on to question number 5, जो कि level 1 का आखिरी क्वेश्चन होगा. Here is question number 5. What Indian IT company, IT services की company है, has the tagline powered
by intellect, driven by values. तो ये भारतीय आईटी कंपनी है जिसका मोटो या टैगलाइन या पंचलाइन आप जो भी कह लो वो है ड्रिवन बाय पावर्ड बाय इंटेलेक्ट एंड ड्रिवन बाय वैल्यूज। तो ये कौन सी कंपनी है इनमें से? इज इट ए HCL, B Infosys और C Wipro? तो आपने कहीं पे उनका लोगो एड कुछ देखा हो तो उसके लोगों के नीचे जनरली वो टैगलाइन आता है, राइट? तो अगर आपने वो टैगलाइन देखा हो तो शायद आपको याद हो which company might have this, और क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल है you can try and eliminate the incorrect answers। अगर आपको किसी और कंपनी का टैगलाइन पता है and you know that it's not this, then you can eliminate that and think of which is the remaining correct answer, right? So your choices are HCL, Infosys and Wipro। इनमें से कौन सी कंपनी इस टैगलाइन का इस्तेमाल करती है? पावर्ड बाय इंटेलेक्ट, ड्रिवन बाय वैल्यूज। The second half पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ड्रिवन बाय वैल्यूज। So this company is very big on values। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। Okay, moving on to level 2। Level 2 में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखेंगे 6 to 10। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है that you will see visual questions। आपको साथ में एक विजुअल भी दिखेगा और सवाल अदरवाइज I will read it out, वो मैं आपको बता दूंगा and then you okay। So ये आपका पहला विजुअल, here it is। ओके, तो ये आप जो लोगो देख रहे हो लेफ्ट में, इट इज a particular platform or you could say software or whatever way you want to look at it, which is generally used for making video games। तो वीडियो गेम्स को बनाने में, वीडियो गेम्स को प्रोग्राम करने में इस प्लेटफॉर्म का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। द प्लेटफॉर्म दैट यू सी ऑन द लेफ्ट, इसका लोगो आपको दिख रहा है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरी पॉपुलर वीडियो गेम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म? इज इट ए ब्लेंडर, बी अनरियल और सी यूनिटी? ये तीनों जो हैं वीडियो गेम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े-बड़े वीडियो गेम्स बने हैं। The question is the logo that you are seeing, that cube जैसा logo with those triangles, वो इनमें से किस प्लेटफॉर्म का लोगो है? Is it A Blender or B Unreal or C Unity? Okay, so the world of gaming, in fact आपका अगला सवाल भी गेमिंग की दुनिया से ही है। So here is question number 7। Question number 7। Game Boy Advance, ये जो आप स्क्रीन में इसका एक एक्चुअल तस्वीर तो नहीं है, इट्स AI जनरेटेड rendition of it। तो ये गेम बॉय एडवांस जो हैंड डिवाइस है, गेमिंग डिवाइस है, थोड़ा हैंड जो गेमिंग डिवाइस आता है जिसका बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, राइट? तो ये गेमिंग डिवाइस जो है ये कौन सी कंपनी बनाती है? व्हाट कंपनी मेक्स और हैज मेड दिस गेमिंग डिवाइस कॉल्ड गेम बॉय एडवांस? बहुत ही पॉपुलर गेमिंग डिवाइस है और बहुत पॉपुलर गेमिंग कंपनी है। So is it A Sony or B Nintendo or C Sega? ये तीन कंपनीज का ऑप्शन आपके पास है। Sony, is it Nintendo, is it Sega? जूम पर इंजॉय मड़ी जाए, नीचे लगते लगते नीचे जूम कर दे मड़ी जाए। Yes and 8। So is it Sony, is it Nintendo, is it Sega? नीचे से Game Boy Advance, तो अगर आपने Gaming Boy device का नाम
हो स्क्रीन नीचे तो गेम में स्क्रीन नीचे सेम कंपनी गेम बॉय जो बनाती है वो गेम बॉय एडवांस भी उन्होंने ही बनाया है. So what is that? It's a very popular gaming product. Probably one of the best most well. Okay. Going to question number 8. And once again, a reminder to everybody, we're going to be taking like one student per institution. So again, a reminder that you are competing against your classmates, friends, schoolmates, everybody. Okay, question number 8 is here. ये जो आपको क्रेडिट कार्ड दिख रहा है, you see the picture of a credit card. You can see some details, Rupee. NPCI, रुपए bottom right hand corner में NPCI NPCI का लोगो लगा हुआ है. पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये क्रेडिट कार्ड जो है कौन सी कंपनी इशू करती है? What company is this credit card from? तो इस फ्रॉम है इंडियन कंपनी, an Indian initiative. जैसे आप देख रहे हो उसमें NPCI चला हुआ है. NPCI is the National Payments Corporation of India. इंडिया बना हुआ है. Right? जो UPI भी चला रुपए payments interface is also powered by रुपए तो इनमें से कौन सी कंपनी NPCI के थ्रू ये क्रेडिट कार्ड इशू करती है? Is it A रुपए, B Visa और C इंडियन कंपनी Mastercard? So this Indian initiative, Indian credit card is made by मार्केट का तो बहुत Can you guys hear me better now? Okay. Clearly it has to be much closer than. वीजा में So who is or what is the company behind this Indian initiative or this Indian credit card? You could say, is it A Rupee, is it B Visa or is it C? 12th में क्वेश्चन आवे थे. बहुत ही आसान सा सवाल है ये. NPCI बनावेली. Go to question number 9. One more question or two more questions to go in level number 1 or 2 rather. Here is question number 9. मो डेबिट कार्ड भी नहीं कन्वर्ट कर दी. इधर को पड़ी जैसे NPCI लख्યું ને नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन मास्टर कार्ड ने विदेश पीछे करने. This is the picture of a humanoid robot developed by the company Tesla. Tesla company आप सब लोग जानते होंगे, Elon Musk. So he decided that his company will also make these robots. ये robots बनाएंगे जो humanoid shape में, human form में है, like you can see in the picture. तो इस robot का नाम क्या है? They've kept a specific name for this robot. तो उसको क्या नाम दिया गया है? This product of the robot that Tesla is making. Is it A Asimo? Is it B Optimus? Or is it C Iron Man? ऑप्टिमस. So the name has been picked from the world of आप बोल सकते हो science fiction, fantasy type. But इसमें is it A Asimo or B Optimus or C Iron Man? ठीक है, so इस रोबोट का नाम बताना है और the name of this product, that is a humanoid robot. Okay, once again, people who just sat down, please start from question number 10 and we'll try and help you recap at the end of question number 20. I'm waiting for that. And for people who are just coming, just make sure you quickly write your names and अगर ये मोड़ा मोड़ा का ना अपने ट्रांसफर हो.
एंट्री ना आपकी कोई 10 सेकंड रिपोर्टिंग टाइम लगता है हमने 12 दिन रिपोर्ट करो तो फिर Okay, we'll bring the last question up for the level 2 on screen now. Here is question number 10, which will bring us halfway into the prelim. Here it is. So, that is obviously the logo of बी Wikipedia. आपको शायद आपने विकिपीडिया विजिट किया है या आपको पता हो विकिपीडिया के बारे में. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ विकिपीडिया? विकिपीडिया करता क्या है? व्हाट इज विकिपीडिया? विकिपीडिया क्या है? इज इट ए यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग? बी इज इट a collaborative encyclopedia, or is it C used for social network? आप विकिपीडिया किस लिए यूज करोगे? इज इट टू डू ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, और इज इट कोलैबोरेटिव एनसाइक्लोपीडिया रेफरेंस के लिए, और इज इट सी सोशल नेटवर्क, सोशल कनेक्टिविटी? सो व्हाट इज विकिपीडिया और व्हाट इज विकिपीडिया यूज फॉर? पहला दोस्त हमारे The साथ logo of which you can see on the side. Wikipedia is used for online shopping, collaborative encyclopedia, or social पहला दोस्त हमारे साथ network. Okay? Pick the right option here. Okay, so that brings us to the end of level 1. Just a reminder, level 2. So level 3 के जो questions है, which is questions through 11 from 2 to 20, वो सारे questions के answer आपको लिखने पड़ेंगे. तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा. I have already told you one, which is that please write the answers as cleanly as possible, ताकि हम पढ़ पाए, because otherwise आपने सही answer भी लिखा और हम नहीं पढ़ पाए तो will not be able to give you marks. And second point, generally speaking, answers में spelling का थोड़ा इधर-उधर भी होगा, so that is perfectly okay. Don't worry about it. ये spelling competition नहीं है, quiz competition है. As long as it is roughly correct, we will give you. Spelling के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, but please write it clearly and clearly. So I can see a few more people also who have just settled down. So we'll start with level 3 in a second. 50 मिनट है Everybody, is there anybody yet to come in? कंप्लीट 10 क्वेश्चन 20 मिनट में खत्म. मतलब 30 So बिजी people में have just sat down. Please quickly ensure that you have written your names on top of the answer sheet and things like that are already sorted. 30 मिनट में मतलब 1 मिनट एक राउंड करता है, एक क्वेश्चन पता है. Okay, generally question number 11 से 20 वो वाला मोड होता है जहाँ पे it creates the difference between the top contestants versus the average contestants. So ये मौका है आपके लिए to kind of put yourself out there and differentiate yourself. Basically हमने power play खेल लिया, अब we are in the middle overs, the tough phase. So buckle down on this and do your best. Okay, question number 11 coming up on your screen now. बहुत ही आसान सवाल, but to clarify, क्योंकि this is Gen 3 and alpha we are dealing with, ATM का मतलब यहाँ पे at the moment नहीं है. Anybody who texts knows what I'm talking about. यहाँ पे we are talking about in the technology and banking sense, ATM का full form क्या होता है? So you see those ATMs all around, right? ऑटोमेटेड. So what is the full form of ATM? ये जो 3 letters हैं ATM, इसका क्या मतलब होता है? एनी टाइम गिव यू बैंक के जो ATMs आप देखते हो, उनका एक full form होता है. So what is the full form of ATM? एनी टाइम मनी. And in this, a clarification they do that you will have to get all 3 right. ATM, तीनों words correct होने पड़ेंगे for you to get the answer or the credit for this question. Okay. अब गेट नंबर What is
the ATM, or what does ATM stand for in a banking and technology context. Okay, let's go to question number 12. I'll obviously also quickly repeat all the questions for you at the end. So here is question number 12. What Indian IT services company, कौन सी इंडिया की IT services company, in fact this was, I would say, one of the earliest companies. So India 90s 2000s में IT में बहुत boom हुआ था, बहुत सारे companies आए थे, but this is a company that's kind of among the original companies which started the IT revolution in India in a sense. तो उसको found किया था शिव नादर ने. What company was founded by Shiv Nadar, which is an Indian IT services company. So उस company का आपको नाम बताना. The Indian IT sector, whenever Indian IT sector का जो history के बारे में बात की जाती है, this is one of the companies mentioned. It still exists, obviously, it's still running. Successful company. So Shiv Nadar had founded it. Shiv Nadar का नाम आपने और जगह भी शायद सुना हो, there is the Shiv Nadar University and things like that. But before that, he was an entrepreneur and a technology man who founded one of India's original IT services company. Just name the company, कौन सी company. Again, reminder, negative marks नहीं है, so if you want to put down a guess, please put down a guess. You never know, it might be correct. अगर आप sure नहीं हो आंसर के बारे में, you don't know the exact answer, please put down a guess. Okay, so that was question number 12. Let's go to question number 13. Okay. Think it is an easy question. ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हो, स्क्रीन पे जो आप कैरेक्टर देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम ए वेरी पॉपुलर मोबाइल गेम. In fact, probably one of the most popular mobile games of all time. Very simple. आपको बस गेम का नाम. What is the name of this game where you will find this character? So this was a huge thing when it was a big success. I don't know आजकल कितने लोग इसको how popular it is, but it's probably one of the first like real games to explode on mobile in general, specifically mobile games. So what is the name of the game? And I'm almost sure कि यहाँ पे 100% जनता ने ये game खेला हुआ है some point or the other. Okay, so we'll quickly move on from this one to question number 14. Here is question 14. IoT. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, the I is capital, the O is small, and the T is capital. Internet of Things. So in the context of technology, Internet of Things. IoT का क्या मतलब होता है? So IoT is a kind of technology that connects different kinds of say appliances to the internet. जैसे आजकल आपका your car is connected to the internet. उसमें बहुत सारी चीजें होती है for which you need to connect or connect to the internet to get those features and things like that. Some of you may have refrigerators at home which connect to the internet, उसमें screen display होता है, right? So or even other kind of appliances जैसे washing machine या फिर ACs, microwave, ऐसे सब चीजें which are connected to the internet. To make them super smart devices. लोग smart device की बात करते हैं. Even at least उन सब चीजों में अगर आपके पास internet connected appliance नहीं भी है, तो TV most likely is internet connected. Is there a question? Sorry, I can't hear you. I'll come to you. हमको तो केवल जरूरत नहीं थी. चलो सवाल सर. एकदम चलो. Yeah.
Yeah. That you can control it from the mobile and things like that, right? आप इससे आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो and so on. So this is facilitated by something called IoT. इसको generally बोलते हैं IoT. ये सारी चीजें जो होती हैं that you can connect your appliances to the internet and run them as smart appliances and so on. उस टेक्नोलॉजी का जनरली जो नाम यूज किया जाता है, टर्म यूज किया जाता है, वो है IoT. शॉर्ट में IoT बोलते हैं. द क्वेश्चन इज IoT का एक्सपेंशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी? So again we are looking for a 3-word answer. 3 words correct होने पड़ेंगे like the ATM question. What does IoT stand for? Going to question number 15. Again, this should be an easy one. PlayStation VR. तो आजकल सारे companies VR products, virtual reality वाले products बनाने लगे हैं. So a lot of companies are releasing this headset, VR वाले जो headset होते हैं, which you put on and you can get inside like a virtual reality environment and things like that, right? So ये PlayStation VR, the PlayStation virtual reality headset, कौन सी कंपनी बनाती है? What company's product is the PlayStation virtual reality headset? अगर आप PlayStation के साथ familiar हो, तो I think you should know the company very easily because they brand. Sony. You know PlayStation, as in you know which company makes PlayStation. So same company obviously makes this, the VR headset. हम कभी कभी सवाल फेंक दें. Okay, so PS2. that was question number 15. Should be an easy one. इस कंपनी का नाम ही लिखना है. Let's go to question number 16. Here is question number 16. In 2009, what was the first internet symbol that was added to the Morse code? The first to be added since World War II. Okay, so I'll take a little bit of time with this question and I'll break it down for you. आप सब लोगों को Morse code के बारे में पता है ना, जो टेलीग्राफ के लिए यूज होता है या मैसेज भेजने के लिए यूज होता है, जो डॉट्स और डैशेस के साथ सारे लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. So until World War II, Morse code, or actually even after, Morse code contained only letters, numbers and certain special characters, जैसे थोड़े से मैथमेटिकल सिंबल्स वगैरह, plus minus things like that, और सारे letters and the punctuation, जैसे full stop हो गया, comma हो गया, ये सब चीजें, right? So those are the only things that were there in the Morse code. But obviously आप इंटरनेट के ज़माने में they have to add an internet reference also. So the first thing that was added was this symbol, इंटरनेट से जुड़ा हुआ symbol है, which was added in 2009, which I think I can safely say before most of you were born or all of you were. चलिए सही. तो ये कौन सा symbol है that was added to the Morse code? अब आप सोचिए इंटरनेट में, I'll give you a clue on this. I'll give you a broad clue. Think email. So the clue is कि ये जो सिंबल है ये ईमेल से रिलेटेड है. आई विल जस्ट टेल यू दैट मच. तो आप थोड़ा सोचो, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी क्विज में आया हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. या गो ऑन. ना जाने को हाँ, आइदर द नेम ऑफ द सिंबल और द सिंबल इटसेल्फ, जैसे भी आप लिखोगे, नो प्रॉब्लम. So that's a good question. तो आपका अगर सिंबल आता है तो आप सिर्फ सिंबल लिख दो, या फिर उस सिंबल को आप एक्सप्लेन करके भी लिखोगे तो भी चलेगा. Anyway is fine as long as तो जैसे आपको मे बी आपको सिंबल आता है और आपको उसका नाम नहीं पता, तो आपको सिंबल लिख दो, that's fine. Okay, so that's question number 16. The latest internet, or the first internet symbol to be added to the Morse code.
Let's go to question number 17. Go through that. So, DigiLocker के बारे में आपने सुना होगा, right? Where you can sort of keep your electronic documents safe. It's an initiative from the government. तो ये जो DigiLocker इनिशिएटिव है, ये भारत सरकार के MEITY MEITY ने डेवलप किया है। MEITY जो मिनिस्ट्री का नाम है, उन्होंने डेवलप किया है ये DigiLocker सुविधा। राइट? योर क्वेश्चन इज, ये MEITY का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MEITY, द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हैज डेवलप्ड द DigiLocker टेक्नोलॉजी। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान की देता हूं। द M is obviously for ministry, because like I said, it is the government of India ministry which developed this. This ministry is called MEITY, MEITY, right? Then M is ministry, so ministry of something या ministry for something होगा। तो आपको बताना है what is the rest of it. MEITY, MEITY। I think न्यूज में आता रहता है MEITY is doing something for the other, like उनके मिनिस्टर को शायद आप देखते होंगे, probably would have read about some initiative of MEITY or for the other. तो ये MEITY जो है कौन सी मिनिस्ट्री है? Once again, for clarity, MEITY, EITY आपको सोचना है, because M is obviously ministry, right? For information, technology. Does anybody want any other clues in this? Yes, no, किसी को और कोई क्वेश्चन नंबर 17 में क्लू चाहिए? एक काम करते हैं, let's do a show of hands. Do we want another clue in question number 17? Okay. Fine. तो आपको थोड़ा और आसान की देता हूँ। I told you what the first thing was for. M is for ministry. फिर बीच में है EIT और लास्ट में है Y. उस Y का कोई अलग वर्ड नहीं है. It's the end of the word. So they've just put the Y there. क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है MEITY, right? So basically I've told you what the M is. I've told you what the Y is. If you can tell me what the E, I and T is, that is a good enough answer. ठीक है, तो ये MEITY का फुल फॉर्म क्या है? उसमें M is for ministry, फिर E, I और T क्या होगा वो आपको बताना है, because Y is just the end of the word जो उन्होंने इस नाम में, so the Y does not stand for a separate word as much. ठीक है? So 3 more questions to go and then we will also quickly do a recap ताकि आप लोग cross check कर सको, plus anybody who came in a little later can also catch up on the remaining questions. But just a quick pointer for people who came in a bit later, that पहले वाले questions जो हैं option वाले questions हैं, so I might not spend like a lot of time on them, probably be less than a minute. तो आपको थोड़ा quickly करना पड़ेगा. That's the only request I have. Okay, question number 18 coming up on the screens. आसान सा सवाल. तो जब आप वेबसाइट्स पे जाते हो, डोमेन नेम होता है जैसे .com, राइट, या फिर .uk, ऐसे डोमेन नेम्स हो गए. तो ये .uk टाइप के जो डोमेन नेम्स होते हैं उसको कहते हैं कंट्री डोमेन नेम्स. .uk is obviously United Kingdom, right? तो अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो जिसका नाम .in में लिखा है, or its domain name is .in, then what does that stand for? What does the .in in your website domain name stand for? क्या मतलब होता है? Right? Very easy one. .in domain name. What does it stand for? Two more questions to go. Here is your
penultimate question, question number 19. मेरा भारत महान. Okay. Again, should be an easy one hopefully. Snapdragon, इस चिप के बारे में आपने सुना होगा. ये फोन्स में बहुत यूज किया जाता है. अगर आप में से कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के सपोर्टर्स हैं, यू हैव सीन इट ऑन देयर शर्ट आल्सो. द क्वेश्चन इज, ये स्नैपड्रैगन चिप जो है, माइक्रोचिप और प्रोसेसर, ये कौन सी कंपनी बनाती है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेक्स दिस लाइन ऑफ स्नैपड्रैगन चिप्स और प्रोसेसर्स दैट आर प्राइमरीली यूज्ड इन मोबाइल फोन? और भी चीजों में यूज होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. Snapdragon is the name of the microchip or the processor. Right? ये कौन सी कंपनी है which makes the Snapdragon? Not really, like I said earlier. ठीक है, as long as I can read it as the original answer, it's fine. ठीक है, so one more question to go and then we'll do a quick run through of all the questions. So ये आपका 20th question and last question of this prelim. Here it is. Who is regarded as the father of the Indian IT industry? So ये जो है, उनको बहुत ही दिग्गज माना जाता है of the IT industry in India. तो ये माना जाता है कि